इसमें क्या है, पहले एक क्लू आएगा, उसका हमें आंसर देना है और फिर फर्स्ट टास्क आएगा। वैसे ही 5 क्लू और 5 टास्क आएंगे और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर देते ही गेम एंड हो जाएगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तीनों को पूरी मीटिंग में अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन रखना है और आप तीनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं चैट बॉक्स में, और अनम्यूट होके भी तीनों डिस्कस कर सकते हैं। गेम स्टार्ट होगा तभी। और ये एक टाइम गेम है, तो जैसे ही आपका क्लू 1 डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपने सब आंसर करके लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, उसका आंसर दे दिया, फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम गेम है, तो उस हिसाब से खेलना है। और सब क्लियर है? कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. Participants, please switch on your video and your audio. Thank you. So everything is clear, then can we start? Is everything clear? Yes, ma'am. Yes, miss. कोई डाउट है? तो स्टार्ट करें क्या? फर्स्ट क्लू दिखाएं क्या? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट। Hello, Samruddhi. Yes. I think the answer is Surya. Yes, I think the answer is Surya. Same. Shall we give? Yes. Yes, okay. The answer is Surya. Surya. Okay, correct. Very good. Next. Match the Is the Subhash. instruction clear? 1 second, okay? Okay. Okay. Yes. Okay, next. I think the first one is the second one emoji. What do you think? Yes. Yes, I think also. The second answer is the fourth emoji line. Yes. Yes. And the third one is the first emoji line. First emoji line. Yes, first emoji line, then Kaku. Fourth is fifth. Yes, fourth is fifth emoji Fourth is line. fifth. And last one is the second. Second emoji. Yes. Okay, so first one, can you repeat the answer for first one again? Just a minute. First one is third. Third. Okay. Tailat Rakshit. Yes. Okay, all correct. Next. Vishaloki Kajapati Punatopi Nakusha Pitasi Chakatam Chakataya Yakti Mohitata. Is the second answer also Surya? Yes, do you think? No, I don't think so. Unnati means it rises up. No? It is told that it is not an elephant. He is big but not an elephant. He grows- rises, but it is not a tree. Pita Yes. Jagadambayaha. Jagadamba is his pita. What do you think?
Is it Any a god? idea? Jagadamba is a god. पिता अस्ति जगदम्बायाः. I don't know यार. Bhargavi, what do you think? I don't know. I don't find anything other than Surya. I think that Jagadamba is a goddess. I also think in the same way. Then what must be the answer? Who is the one who has father Jagadamba? Time is very less. We have to complete 5 clues. So your time is up. Good participation, friends. You'll know the results in the closing ceremony tomorrow. ओके ग्रेट. सो इसमें क्या करना है, एक क्लू आएगा, उसका आंसर देना है, फिर एक टास्क है, उसका आंसर देना है, और फिर सेकंड, ऐसे सेकंड क्लू सेकंड टास्क ऐसे कर करके 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्लू और 5 टास्क, और लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर देने के बाद गेम एंड हो जाएगा. तो ये एक टाइम गेम है. जब क्लू 1 आएगा तब आपका टाइम स्टार्ट होगा और लास्ट क्वेश्चन के आंसर देने पर आपका टाइम एंड होगा. जनरल इंस्ट्रक्शंस है कुछ. तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि तीनों को पूरा टाइम ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन रखना है, और आप तीनों आपस में डिस्कस कर सकते हो. मीटिंग चालू है तभी चैट बॉक्स पे भी कर सकते हो, अनम्यूट होके भी कर सकते हो. तो कुछ डाउट्स है? No, ma'am. Is everything clear? Participants, please switch on your audio and video. Is everything clear? Yes. Yes, ma'am. Can we Asta, start? can't see your video. Asta, please switch on your video. Asta? Hello, Asta? Astha, are you there? Please switch on your video. Please switch on your video, Asta. Asta, is there any issue? Okay. Okay, so is there any doubt? Everything clear? Can we start? Okay, so now your time will be start as soon as you can see the first clue. So start. Next. Surya Devta. Yes, next. Are the instructions clear? Yes, they are clear. Okay, okay. Next slide.
सेकंड का फोर्थ है. Yes, correct. का second है. I am not able to hear. Can you tell again? Ma'am, fifth one का second है. Yes, correct. थर्ड का फर्स्ट है. Third one, Yes, correct. and first one का last है. Try again. फोर्थ का लास्ट है. Yes, correct. तो फर्स्ट का थर्ड. Yes, correct. All correct. Good. Next. Friends, you can unmute and discuss with your teammates. सन है इसका आंसर. सन. You are telling me the answer or you are discussing? आई एम टेलिंग यू द आंसर. It's wrong. Try again. Read the verse carefully, friends. Hello, Niral. Yes. Do you have any idea what Jagdamba means? No. Asta? I think Jagdamba.
Astha, your voice is breaking. Ma'am. Hello, ma'am. Yes, you're audible now. Yes, Astha. Did you say the answer, Astha? Because we couldn't hear you. Ma'am. Ma'am, I think Jagadamba means Parvati. Neeral and Harsh, can you hear her? Because we can't. Are you Even guys we can't. discussing? Tell us the final answer when you're done. Hello, ma'am. I'm audible now. Niral and Yes. Astha. Yes, yes. निरल, Hello. Yes. ये जगत की अम्बा कौन होती है? It's goddess Amba. I've heard that Jagat ki Amba goddess Amba hoti hai. It means Parvati Devi. Gauri. Lord Shiv's wife Parvati. Very close to the answer, yes. So Is the answer Lord? Neeral, you're on mute. Couldn't Ma'am, hear is the you. answer? Sorry. Ma'am, is the answer? No, that's the wrong answer. Hello, ma'am. I'm audible? Astha, you are not audible. Please speak little. थोड़ा जोर से बोलो. I guess नहीं सुनाई दे रहा है. Closer. Very close, very close. Really is close. Himalaya is the answer. Yes, correct. Got the instructions? All three of you have to repeat it 3 times. Tongue twister. Oh, yes. Okay. Next slide. Participants, you have to say it aloud, okay? Astha, please on your video. Who is speaking first?
Asta, please switch on your video. Participants, the time is counted, okay? You have to say this tongue twister out loud. Churitelam Asta, please check your network. Your voice is breaking. Please check your network. Neeral, is your camera on? Yes, ma'am. Okay, thank you. Ma'am, may I? Yes. Yes, yes. Churitalam madhugostani faladayam Twadadhara mrudulo pakhandaya mupadehi Churitalam madhugostani faladayam Twaradhara mrudulo pakhandaya mupadehi Churitalam madhugostani faladayam Twadadhara mrudulo pakhandaya mupadehi. Good going. Next. Ma'am, may I? Yes. Churitalam madhugostani faladayam tava dhar Neeral, is there any issue? Ma'am, may I? Yes. Churitalam mrudugosti faladanam tava dhar mrudulakhandaya mupadehi. Asta, again your voice is Churitalam breaking. Have to speak continuously 3 times, back to back. Churitalam madhugosti faladanam tavadhara mrudulo pakhandaya mupudehi. Churitalam madhugosti faladanam dayam tavadanta mrudulo pakhandaya mudupedehi. Churitalam madhugosti faladanam dayam tavadhara mrudulo pakhandaya mupadehi. Ma'am, can I? Yes. Churitalam madhugostani faladayam tava dharma mrudo lo pakhandayam mupadehi. Churitalam madhugostani faladayam tava dharma mrudulo pakhandaya mupadehi. Churitalam madhugostani faladayam tava dharma mrudulo pakhanda mupadehi. Great going, guys. Next.
Come on guys, use your teamwork. Discuss करो. किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? It's not a bird, but it can fly. Yes. पक्षा होता है क्या? पक्षी. Ma'am, is it cloud? Yes, ma'am. Is it clouds? Cloud. Close. Sanskrit. संस्कृत Megha. Correct. Megha. Yeah. Identify the product on it. Catchy advertisement. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Madhuram bhavatu. Honey. Honey. What do you think? I think the same. Asta. Yes. Hello. Ma'am, is it honey? Oh no, it is not. It is a famous tagline of an advertisement, and you have to guess the product. Advertisement, guys. Advertisement. Oh, अच्छा. Advertisement. Hey, Cadbury. Chocolate. Yeah. Cadbury. Correct. Correct. दिमाग की बत्ती जला वैसा कोई एडवर्टाइजमेंट का कैची लाइन है? About online platforms. दिमाग की बत्ती जला हुआ है। टीवी रखना। Asta, do you have? What do we need to do in this? इस टैगलाइन का मतलब है दिमाग की बत्ती जला हो। ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट आती है? Asta, if you are not able to join, then you can type in the chat box so that your teammates are able to know the answer if you know it. Keep on trying. Very close. Asta, also try switching on your camera. ये मुझे ना पर किया ऐसे किसकी तो एडवर्टाइजमेंट लग रही है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। बॉर्नविटा वगैरह होता है ना, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स साइड से वैसी की तो एडवर्टाइजमेंट है। Tubelight. सूर्या। Is it something related to tube light or lights or electronics?
Asta, please switch on your video. दिमाग की बत्ती जलाओ क्या है I guess it's something about LED lights. I've heard that, but I'm not sure. Ma'am, are we close to it? ट्रांसलेट करके देखो, you are close to it. मैम ट्रांसलेट करके देखा लेकिन वो कैच लाइन ही याद नहीं आ रही है वो काफी कैची लाइन है, काफी फेमस है एड. Guess the product, the line and all translate. मंच कोलगेट इसका ट्रांसलेशन होगा जलाओ, राइट? हाँ हाँ Siska LED. It's a brand name. Ma'am? No, wrong. No, wrong. आग की बत्ती जलाओ ये क्या डिग्री नहीं है Try. You all are going very good. Try. Discuss among yourselves. Maybe you can get the answer. Ma'am, we are on the correct track, right? It's a electron thing, right? Actually, we cannot tell you like that. मुझे इलेक्ट्रॉनिक लगता नहीं है इट्स समथिंग कि हमको कंज्यूम करके ऐसा कुछ लग रहा है मुझे Okay. जैसे आई हैव नो आइडिया You guys are really close, really close. मैम 5 स्टार No. Very close, very close. एकदम close है. Bonvita or Horlicks? No. No. मंच No. पर्क It's something starting with S. No. Not pork also. अरे एकदम close हो guys. Think in similar terms. Snickers? Sorry. No. Then what's that? जेम्स No. Friends, ad बहुत famous हुआ था. You guys are really close. You can do it.
Ma'am, Mentos. Mentos. Correct. Yes. माउंटेन नहीं, थम्स अप. Oh. Correct. Next. फ्रेंड्स प्लीज रिमेम्बर आपका टाइम जा रहा है. डिस्कस फास्ट. वर्ड्स को ठीक से रीड करो. मिलेगा आंसर, मिलेगा. कोई आइडिया आ रहा है? मुझे तो कुछ नहीं आ रहा. Come on, you can do it. Is it specs? क्या हुआ? आंसर में बोल. Astha, is your camera on? फ्रेंड्स प्लीज डिस्कस. मिलेगा आंसर, मिलेगा. नीरल, तुझे वृकोदर क्या होता है पता है? बाकी मुझे समझ रहा है. नहीं.
ये कोई एनिमल है, लाइक फॉक्स और वुल्फ? आई एम नॉट श्योर बट आई एम जस्ट गेसिंग. ऐसा कोई उनमें रिलेशन होता है, मतलब किसी का कोई अंकल वगैरह होता है, जैसा वो बिल्ली को बोलते हैं ना शेर की मासी, वैसा कुछ रिलेशंस होते हैं उनके? आपको ओवरऑल इसका मतलब समझा क्या? कुछ भी, एनी आइडिया? ट्रांसलेट करके देखो, देखो कुछ होता है क्या. निरल, वर्षा मैम जैसे करते हैं ना, वैसे एक एक वर्ड का करके देखते हैं, शायद कुछ आ जाए. पारदर्शी क्या होता है? दर्शी, दर्शी. आई थिंक दर्शी मतलब देखने वाला होता है, तो शायद से दूर का देखने वाला, जैसे आस्था ने बोला वो कंसिडर. Astha, please turn your video on. दर्शी ठीक है. पार मतलब ऐसे, व्हाट कैन वी से, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा, ऐसा कुछ. पारदर्शी मतलब ऐसा कुछ हो सकता है. हाँ, हो सकता है. सर, गेटिंग क्लोज गाइस, गेटिंग क्लोज. लेकिन वो थर्ड लाइन में तातो अस्मी है ना, वो कुछ बैठ नहीं रहा है, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे बार बार. तातोस्मी. इसका संधि करके देखें क्या? हाँ भाई, वो संधि है, ताता प्लस अस्मी. आपको फर्स्ट लाइन का मतलब समझा? हेलो. नहीं, मुझे व्यापी समझ में नहीं आ रहा. सर्व मतलब हर जगह, तो ऐसी कोई चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, ऐसी कोई ट्रांसपेरेंट. एयर. एयर, हाँ एयर हो. वेरी क्लोज, वेरी क्लोज.
Translate. वायु, पवन, वायु. Correct. Correct. Next. Taking your time, memorize 10 words in the day. तीनों कर सकते हो. तीनों को करना है. नहीं, नहीं. तीनों एक साथ कर सकते हो. 10 वर्ड्स दिए होंगे. एक कोई भी कर सकता है या फिर ग्रुप में भी कर सकते हो. Okay, ma'am. Next. ऑर्डर में. हाँ, ऑर्डर में रिकॉल करना है. Are you clear with the instructions? हम ग्रुप में कर सकते Yes, हो मतलब वो नहीं समझा. मतलब वो 3 मैं 3 आस्था 4 ऐसे ग्रुप में. यस मैम. नेक्स्ट स्लाइड. हो जाए तो हमें बताना कि हमारा हो गया है करके. Yes, ma'am. Friends, you can work as a team in this memory task as well. First, मेरे 10 Astha and 10 हो गए. Ma'am, I'm ready. Okay. Okay. All of you are ready? यस मैम. Yes, recall the words. मयूर, मशक, गोकुल, पायसम, पिपलिका, हसनम, पाठशाला, Pathshala. श्रुगाल, निघंटू, बुभुक्षु. Next. Excellent job, guys. अर्गस्य स्नानम. तुझे कुछ समझ रहा है क्या? मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन समझ रहा है. मैं भी थोड़ा. I मतलब guess एक निसर्ग में एक ऐसा निसर्ग. हाँ. एनवायरनमेंट टाइप ऐसा जहाँ पर एक अच्छा स्थान है जहाँ पे ज्ञान
प्रदीयते मतलब टाइप ऑफ दिया जाता है। पवित्र मंत्र ही मतलब ऋषियों का ये एक पवित्र मंत्र है। और लव कुश का यहाँ पे ये है, बाल्ये न लव रामपुत्र यो हो। स्कूल या पाठशाला। गुरुकुल, वो ऋषि। मैम इज इट Close, गुरुकुल? very close to the answer. Very close. वो कहाँ पर भेजते थे उनके बच्चों को पहले के जमाने में? गुरुकुल में ही भेजते थे ना, और कहाँ? मैम 1 Still close. Very close. विद्यालय। मैम विद्यालय। उसी से क्लोज सोचो, थोड़ा सिमिलर सोचो, मिल जाएगा। मैम विद्यालय पाठशाला। हाँ, उसके क्लोज सोचो। और क्लोज। गुरुकुल। लाइब्रेरी। मैम लाइब्रेरी। नो नो। बहुत क्लोज हो, ट्राई करो। गुरुकुल का कुछ तो याद आ रहा है क्या? थोड़ा भी ऐसा आजू बाजू में। नहीं। Think in आस्था? terms of the verse. Verse. आस्था, तुझे कुछ आइडिया आ कोई रहा है? सिनोनिम। Asta, please check your network. We are able to hear each other. Please check your network. Think in terms of the verse.
निसर्ग में निसर्ग, मतलब ऋषि, नेचर में think ऋषि in का terms of the words. वो पेड़ के नीचे बैठते थे तो पेड़ वेड़ ऐसा कुछ आएगा क्या? अरे वो लवकुश कहाँ पर रहते थे? ऐसा कोई स्पेसिफिक जंगल था जहाँ पर ऐसा वो रहते थे? कुछ हेलो आस्था, तुझे कोई आइडिया आ रहा है? फ्रेंड्स, वर्स में देखो, वर्स में ही आंसर है, देखो मिलेगा मिलेगा. Think in terms of the words in the verse. निसर्ग. Close, close. Rushi, Nisarga, think in terms of these words. रामायण. No. हेलो, हाँ हाँ आस्था, तुझे कोई आइडिया आ रहा है इसका क्या आंसर आ सकता है? आपको क्लूज कौन से मिले अभी तक? एक्चुअली मैं आप लोग को सुन नहीं पा रही हूँ. एक क्लू मिला है, एक्चुअली बहुत सारे क्लू मिले हैं कि एक निसर्ग में मतलब नेचर में ऐसा स्थान है जहाँ पर नॉलेज दिया जाता है और वो ऋषियों का एक पवित्र मंत्र है. लास्ट लाइन मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही. मुझे आई थिंक ध्रुव तारा. हेलो, मैम, धरती. No. Wrong. Come on, you can do. वाटिका. Close, indeed close. No. It is related. Similar terms में सोचो. Come on guys, डिस्कस करो, कर सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा जा रहे हो. तुझे कोई आइडिया आ रहा है क्या? मतलब क्या हो, मतलब हम लोग पास है लेकिन कहाँ पर? आस्था, तुझे कोई सिनोनिम याद आ रहा है? वन, निसर्ग, इससे कुछ आइडिया आ रहा है?
Ashram. Correct. Next. Given jigsaw puzzle appropriately, read out the alphabet of the image that you feel is appropriate. Are the instructions clear? जिक्सॉ पजल है, उसको ज्वाइन करना है, बेसिकली पजल को ज्वाइन करना है. एग्जाम्पल A3, तो वैसे अल्फाबेट को नंबर के साथ ज्वाइन करके बोलना है. तो Okay. क्लियर? Okay. Yes. नेक्स्ट. B1, Yes. B1. यस करेक्ट. then D2. D2, यस करेक्ट. F3. करेक्ट. 4C. करेक्ट. 5A. A5, करेक्ट. And then 6E. 6E, करेक्ट. करेक्ट. नेक्स्ट. वेरी गुड गोइंग. Mushika Punah Mushika. That's it, correct, and your time is noted. Very well done. Congratulations. You have solved the whole treasure hunt and you got the treasure. Great going, guys. Great teamwork. Good to have you guys here. Actually, I was facing some problems, so can you repeat what you said, Josh? Nothing much, sir. I haven't explained any instructions. Just that I took your attendance and we'll be And beginning yes, now. I am from Simba. I, Ritika, and Advait. Yes, sir. Yes, sir. We have it right here. Your attendance is taken and duly noted. Okay. Is there anything else? I presume no. So once again, I welcome you all to the Dhruva Sanskrit Mahotsav Treasure Hunt event. And since you all are here, we can begin. Sangeeta, please go to the next slide. So these are the general instructions. First of all, throughout the game, you have to keep your audio and video on. So please switch on your cameras and your mics as well. You can use the meeting to discuss amongst yourselves. You can talk to each other, discuss the questions and everything, right? So you can also use the chat box if you want. And the format of the meeting will be that you will be having 5 clues which will lead you to your treasure. After each clue, there will be an activity. Once you understand all the rules, we will go to the next slide which will display the first clue. Once you solve that, there will be an activity and then the next clue and so on and so forth. Okay? So, as I said, you can talk amongst yourself in the meeting itself. You can use the chat box to communicate also, right? And be on your toes, guys, as the team that completes the hunt in the least time wins. So be on your toes, be quick, and go through the instructions again. If there is anything, you can ask me, and if not, we can move ahead. Sir, please give me 1 minute. I'll be back in 1 minute. Yeah, sure, sir. Till your fellow participant resumes, you guys can ask any clues if you have, or any doubts if you have. Okay, so are you guys ready? Yes, sir. Perfect, amazing. So let's move to the next slide. And your time starts now. All the best, guys. Sir, I'm only able to see presentation.
You're not able to see the first clue. No, sir. Is that happening for everybody else as well? Because I can see it. I can see. I can also see. Mr. Rishikesh, please check your connection. There might be some issue on your end. So guys, as I said, you can discuss in the meeting here itself. एक दूसरे से बात करके आंसर दे सकते हैं. Can I leave and rejoin again? Yes sir, you can. Because I can only see presentation and Sangeeta Kalwa. Yeah. Not a problem. You can leave and rejoin. It works. Till then, guys, you can think of the answer. If any of you is answering, please unmute and answer or put up in the chat. अद्वैत कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है इसका. Come on guys, think. As I said, you have to make a toast. Time जा रहा है तुम्हारा. It's easy, guys. Think a bit harder. You can get it. Okay, the third participant is back. You guys can discuss again. The clock is ticking. Hurry up. Is the screen visible now, sir? Mr. Rishikesh? Yes, now it is visible. Yeah. Sir, and if we don't know the answer, can we pass or do we have to answer each one? First of all, try to answer. Just think about it right now. We'll see later. Because I wanted to ask that if we give the wrong answer, is there any negative marking? No. There is nothing such as negative marking. You can give 100 answers, not a problem. You can try random answers also right now. जो भी आता है दिमाग में बोल दो यार, कोई टेंशन ही नहीं. Surya how? That's right. Okay, so this is your first task. You can read the rules. So there will be subhashit given and you have to match it according to the emojis given in the other row. Match the following जैसा रहता है वैसे. Is that clear? Yes. So we'll move on. For the fourth one, it's the last one. Correct? For the second one, it's the second last one. Correct?
For the third one, the first one. Correct. For the fifth one, the second one. Correct. Yes, correct. For the first one, the third. Then for the first, the third one. Yes, correct. Great going, guys. You're picking up the pace. That's good. This is the second clue. You can't take help, sir. शैडो को संस्कृत में क्या बोलता है? छाया ना शायद से. Chaya. No, that's the wrong answer. Samudraha. No, that's the wrong answer. Think harder. You can discuss, as I said. Parvataha. That's correct. Okay, so this is your second task. Now this is a tongue twister. You will see a line. All three of you have to say the line 3 times each. Okay? So let's move. Who will be going first? You can directly read it from here. Come on guys, don't waste time in this. सीधे पढ़ना है यहाँ से ही. Itika, can you go first? Yeah, okay. Shuritailям madhugostin. No, I started. Wait, I will go again. Shuritailям madhugostani faladan. Wait, I'll read it once. Till then, maybe some other member can go. Should I? Yes, you can. Don't waste time. Shuritailям madhugostina faladayam twadagda mrudulo payak akhandare. Most there is lot of mistakes. You should go again. I'll go in later. Okay, read it and then you can say it. Till then, third member, Mr. Rishikesh, would you like to try? Shuritailям madhugostani faladhayam dhyayam twadadharam mrudulopa khanda yamopadehi. Okay. You have to read it 3 times. Mr. Rishikesh? Shuritailям madhugostani faladhayam twadadharam mrudulopa khanda yamopadehi. Shuritailям madhugostani faladhayam twadadharam mrudulopa khanda yamopadehi. Shuritailям madhugostani faladhayam twadadharam mrudulopa khanda yamopadehi. Okay, correct. Who wants to go next? I will go. Okay. Shuritailям madhugostani faladhyam twadharam mrudalopa khanda yamopadehi. Okay. Shuritailям madhugostani faladhyam twadharam mrudalopa khanda yamopadehi.
चुरितैल मधु गोस्तनी फलाढ्यम त्वदरं मृत लोप खंडमयोप घेहि. Okay. शोरितैलं मधुगोस्तनि फलादयं वदधर मृदुलोपख नडमुपदेहि. No, sir. The last line. शोरितैलं मधुगोस्तनि फलादयं वदधर मृदुलोपख पखण्डमुपदेहि. You guys can help him maybe for the pronunciation. Advait, it is Lopakhanda. लोपखण्डयमुपदेहि. Right. So you can go again. शोरितैलं मधुगोस्तनि फलादयं त्वदग्रत मृदुलोपखण्डयमुपदेहि. Okay. शोरितैलं मधुगोस्तनि फलादयं त्वदधर मृदुलोपखण्डयमुपदेहि. शोरितैलं मधुगोस्तनि फलादयं त्वदधर मृदुलोपखण्डमुपदेहि. Okay, very good. We'll go on. This is the third clue. Megha. That's correct. So this is the third task. You will be given a product tagline translated in Sanskrit. You have to identify the product. Television advertisement का tagline होता है वो. Is it clear? Okay, then we'll move on. मधु. Sorry. मधु. 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 That's wrong. It's a product. तो वो इंग्लिश में मतलब जो कंपनी का नाम मतलब वो प्रोडक्ट का जो नाम है वो बोलना है कि संस्कृत में जो नाम है वो बोलना है. No, you have to tell the name of the company. अमूल. No. Cadbury. Yes, that's right. You need to face up, guys. It's pretty easy. Come on. You can try translating this into English or Hindi most probably. Television advertisement है वो हिंदी तो हिंदी में translate करो. इसमें सनस्क्रीन का कंपनीज आ सकता है ना. कौन से कंपनी? सनस्क्रीन. या आ सकते हैं. Whatever company, whatever product it can come, but the tagline is there. That is the main thing. चलो यार टाइम जा रहा है और ये हैवी बहुत इजी. फेयर एंड लवली. नो. ग्लो एंड लवली. नो. You guys can give random guesses. कुछ भी guess किया तो भी चलेगा. Wrong answer पर कोई negative marking नहीं है. As I said, try translating the line.
Come on, guys, think. The clock is ticking away. Mentos. Yes, that's absolutely right. The final tagline. Even this is very easy. Thumbs up. Yes, absolutely right. This is the fourth clue. Good going, guys. Going really well, guys. Just think a bit harder and you'll get it. ऐसे का है ना यहाँ की मतलब ये जो भी है उसका मतलब फादर एक वुल्फ है. दर्पणम. No. As I said, you guys can discuss. बात करके एक दूसरे का आंसर मिल जाता है कभी. Think. Come on, guys, think fast. रितिका तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मुझे कुछ आ नहीं रहा. अद्वैत. नहीं, लाइन्स का ट्रांसलेशन है तो बोले ना. हाँ, मुझे भी ट्रांसलेशन नहीं समझ रहा. ये तो कह रहे कि ये जो भी है उसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है. हाँ. Very good. That is a good first step. Think. Very good. You are on the right track. जलम. Close, but it's not Jalam. It's yes, absolutely right. It's Vayu. Now this is your fourth task. Now this is a memory game. There will be 10 words. You have to say the 10 words in the exact same. Okay. Now we just want the 10 words. Not each and every one of you has to say the 10 words. ऐसा कोई compulsion नहीं है. मेरे को सिर्फ 10 words order में चाहिए. तुम लोग discuss करके बता सकते हो. ठीक है? So we'll move ahead. If it's understood. Right? Order कैसा है? Left to right नहीं, top to bottom. Top to bottom. Mayura to Bubhuksha. That is the order you have to follow. तो पहले मयूर फिर मशक है कि मयूर फिर नशक? Mayura and Mashak. Yeah, that is. तो ऋषिकेश तुम फर्स्ट 3 कर. मयूर, मशक, गोकुल. मैं पायसम, पीपीलिका और नसनम करती हूँ और फिर तू बाकी का 4 कर. Once all 3 of you are done, just give us the signal.
हाँ मेरा हो गया। हुआ। ठीक है, मेरा भी हो गया। Great. So we'll move ahead. Now say the words. मयूर मशक गोकुल। Correct. पायसम पिपीलिका दशनम। Correct. पाठशाला शृगाल निशंटू बुभुक्षा। Wrong. What's the fourth? What's the second last word? निशंटू। No. सर may I? Yes, you can. निघंटू। Yes, that's right. बुभुक्षा। Yes, perfect, perfect. So this is the final clue, guys. After that, there will be an activity, and then you will get your treasure. वन। No, but it's close. What's in a one? You can discuss, as I said. वृक्ष। No. Think, guys, focus on each and every line and you'll get it. गुरुकुल। Very close, very close. What? Gurukul, what? There is another word for it. Think of it. आश्रम। Yes, absolutely right. So this is your final task. It's a jigsaw puzzle. हर पिक्चर को एक अल्फाबेट असाइन होगा और हर पोजीशन को नंबर। तो मतलब A से 3 नंबर के पोजीशन पे मेरे को फोटो लेके जाके वो पूरा फोटो कंप्लीट करना है। क्लियर? ओके, सो विल मूव अहेड। B21। Yes, correct. C24। Correct. B22। Just a second. One at a time, please. D22। Yes, correct. A25। A25। Correct. E26। E26 and F23। Correct. Perfect. Now take a good look at the picture. Sangeeta, just flip so that they can see the full picture once. Take a good look at it. Okay, let's go. Next slide, please. So, based on all your 5 clues, you have to now guess the name of the story, which will be your treasure. May I? मूषिका एवं मूषिका। What did you say? Repeat. मूषिका पुनः मूषिका। Yes, that's perfect. That's perfect, guys. Yes, I wanted to say the same thing. Mushika Puna Mushika. Yeah, you guys are a team. कोई भी पहले बोले चलता है यार. So you guys have found the treasure. Stop the time, Sangeeta, please. Yes, fantastic, guys. Very good. And since you have found the treasure, congratulations. You will get the results at the closing ceremony. It was amazing to have you guys here participate so well. Thank you so much. You may leave the meeting. हमें टाइम कितना लगा? वो नहीं बता सकते यार, सीधा विनर पता चलेगा तो सैटरडे। Okay? Okay, thank you. Thank you so much. Thank Bye you. bye. Thank you, sir. Yeah, thank you so much.